आज हम खड़े संविधान चौक पर और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी और कल जो पुलिस ने बर्बरता के साथ में दिल्ली में छात्रों की हिंसा की, छात्रों को मारा, एक छात्र गंभीर रूप से घायल है, उस सब की प्रतिक्रिया के रूप में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भव्य रूप में छात्रों का आक्रोश है। संविधान चौक के हर एक कोने में यहाँ पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, एक फ्लेक्स है। वैसे ही कुछ छात्रों से हम यहाँ मिल रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, वो किस हिसाब से संविधान चौक पर आई है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रणव कामले है, मैं नागपुर का नागरिक हूँ, सुशिक्षित नागरिक। ओके, आपकी यहाँ पे मांगे क्या है, आप यहाँ पे क्यों आए? देखिए, पहले तो मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, ये तो पूरे देश की मांग थी। पर जिस तरीके से सोनम वांगचुक को वहां से उठा के लेके चले गए, किडनैप करके लेके चले गए, तो उससे देश मैं भड़क चुका हूँ पूरी तरीके से। और अभी हमको मोदी का इस्तीफा चाहिए। पर यहाँ पर तो मांग हो रही थी कि नीट पेपर लीक की बात है, फिर वो हिंसा में बदल गया, सांसद मार्च में बदल गया, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 20 बच्चे मरे सर, 20 बच्चे। वो अगर उसके मरे रहते तो उसको कैसे लगा रहता? उसका खुद का बच्चा मरा रहता तो कैसे लगा? खुद के बच्चे मस्त लंदन, यूके, पेरिस, फ्रांस। आप क्या मानते हैं कि ये जो क्रांति यहाँ पे संविधान चौक पे हो रही है या सत्ता परिवर्तन करने जा रही है, 2029 में मोदी का क्या होने जा रहा है? सत्ता परिवर्तन अभी होगा, और अगर नहीं हुआ 2 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ मैं इस देश का सुशिक्षित नागरिक 2 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ। अगर 2 दिन में अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो मैं अनशन में बैठ जाऊंगा नागपुर। सोनम वांगचुक जी भी दिल्ली में अनशन पे बैठे थे, उन्हें फोर्सफुल तरीके से 21वें दिन पे उनको डिटेन करके उनका अनशन खत्म किया गया, तो आपका भी तो अनशन खत्म कर सकते हैं। देखिए, नागपुर है जो सेंट्रल जियोग्राफिकल सेंटर है, यहाँ पे आरएसएस का भी गण है, यहाँ पे दीक्षा भूमि भी है, बाबा साहब ने यहाँ पे दीक्षा दिलवाई थी। नागपुर में आवाज गूंजेगी तो सेंटर क्या पूरे वर्ल्ड में जाएंगी। युवाओं का कहना है कि जैसे संघ भूमि नागपुर में है, वैसे दीक्षा भूमि भी नागपुर में है। आइए और युवाओं से जानते हैं कि आपका क्या मांग है, आपकी क्या मांग है, यहाँ पे आप क्यों आए हैं? पहली बात तो आपने ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आपकी क्या मांग है, क्योंकि सबकी मांग एक ही है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी फॉर द ब्लंडर्स दैट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। माय नेम इज श्रीनिवास कुडाप एंड आई एम अ रॉक जर्नलिस्ट। आई वर्क फॉर एन अमेरिकन कंपनी. The reason I work for an American company, it's because the journalism in this country was way dead back in the time of CAA and NRC protests. We were able to cover it, but then all the coverage was, you know what happened, you guys were also there. So, answer to your question is, why I am here, what do I want? I was not here days before. Okay. This is the first time I'm coming over here. Why I'm coming over here? Because what happened on the 28th of July, I cannot sit at my place. So you think it is a reflex of the action taken by police on the Delhi Jantar Mantar, right? No, the commissioner or the Delhi police could have been able to handle the matter in a much more virtuous manner, in a much more peaceful manner, because the protest was peaceful. Not a single protester was carrying but some inputs are stating that some protester might be harming the police officer, So just because of one, no. I mean, I don't understand. Just because of one bad apple, you're going to generalize every single protester that's out. What? Not just that. Even Deepke was hit. Yes. What your stand on Sonam Wangchuk detention by Delhi police? Okay, first of all, Sonam Wangchuk detention by Delhi police, it is unacceptable, highly unacceptable, because he is a free individual. He has his own rights. He has his rights to make his own choices of what he wants to do and what he does not want to do. Now, if at all I want to send a message to Mr. Wangchuk, first of all, Mr. Wangchuk, we love you. We love you. We love you. Second of all, Mr. Wangchuk, I really request you to please break this hunger strike, because it is not worth it in front of such a government. What will be the next move expected by Abhijit Dipke from your side? Okay, these are pretty much open-ended questions, okay, and I don't want to fall in a bad place. Already I You want to be neutral in this matter? Not really neutral, but I want to be with the students. I don't want to say things that would impact this particular protest, because But actually I am not one of them. Because actually the Abhijit is leading the CJP protest, right? Yes. So he has an accountability to address the protester about the next step. CJP agenda is a totally different aspect. Okay. People over here are for the students. People over here are for the ज्यादती जो बच्चों के साथ हुई गई है 20 तारीख को। 20 तारीख को अगर ये नहीं हुआ रहता, मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं आपको बता रहा हूँ। Okay. हम यहाँ पे नहीं रहता because we trusted our government. We trusted the constitution of the तो मुझे बस एक बात बताइए, सिर्फ एक बात बताइए मुझे। I will listen to you. Just let me complete. We were abiding. The protest was being abided
by the Constitution of India. Yes, right. Everything was done within the Constitution. The lynching that happened, as per the Constitution, the lynching should not have been done above the kneecap. It was done above kneecap. You know what all things have been done, but I don't want to take much of your time. Do your research, get your sources right. But this flame is only and only gonna get worse if no one from the BJP. So what's your party has demand a now? dialogue. What's your demand now? Because it is At not this particular because point, you okay. come after the police attack, right? Yes, So you at- are at this particular point. you are the making only accountable demand- our home minister, right? Absolutely. Okay, come on. Tell me one thing. इधर की उधर एक सुई नहीं जाती हमारे देश में होम मिनिस्टर के अलावा. Yes. Kids are getting lynched. Yes, Girls are getting molested. right. Okay, girls are getting beaten up. Their clothes are being torn apart. Right. वो वहाँ पे दिल्ली पुलिस. Delhi is the rape capital of India. Okay, Yes. they cannot curb that situation, and they are putting their efforts to curb this. आज सीजीआई ने कहा कि हमें वो वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देखिए, CGI कि ने हम खुद वो शुरू वीडियो की नहीं है देखेंगे और हम ये मामले को कल सुनेंगे. तो सीजीआई जब सुप्रीम कोर्ट भारत का ये मामला नहीं सुन रहा है तो इस पे भी युवकों के किसके तरफ उनके युवा यहाँ पे क्यों है? क्योंकि बातें सुनी नहीं जा रही है. ये प्रदर्शन किस चीज का है? ताकि बातें सुनी जाए. So please don't ask obvious question. You are asking me that the sky is blue and the water is wet. I Come on. am asking about the opinions of the students, right? It's very simple opinion. At this particular point, let me tell you one thing. No opinion, no support has been so much of a general support as compared to the students' protest. Okay. You must have seen a lot of celebrities who are not supporting this particular Yes, right, movement, but now they are supporting it because this is not just about CJP. Because this guy's movement This is right. is about the freedom of each and every single person over here. Yes, If right. I am going out there, and if I am lighting my cigarette, Yes, which I am buying out of my own money, correct. I want to take utmost pleasure out of that single puff that I'm taking. Right. I don't want to keep all these things in my mind that this is not my country. Okay, I am a metalhead. I am a rock journalist, as I said. Yes. This is Megadeth. There's a beautiful song by Megadeth called Take the Prisoners. Okay. One line I would like to say. We should stop asking that what we can do for our country, but rather we should ask that what our country can do for us. What is it doing? We pay taxes, we don't have good water, we don't have good roads, we have no security. Nagpur 35 to 37 murders happened. What kind of are doing? What kind of? Right. So why are we the citizens of this Right, country? right. Why? Give me answers. Right. If we get answers and if those answers are satisfactory, as I said, I'll go out, I'll spark that cigarette. अबे go back के नारे इसलिए लग रहे थे. हमारे एक सरदार भाई थे, बहुत अच्छा प्लेकार्ड डाल के थे. As spoken like a true prodigy, ऐसा such that you cannot fuck with it. Please excuse my language. Like the sun rises from east and sets in west. आप इस बात से नहीं लड़ सकते हो. Right. वैसा कुछ एक प्रॉपर चीज उस बंदे ने डाला था. Okay. बीच में एक गोदी मीडिया वाला शायद से आई एम नॉट श्योर because he was definitely looking like one. Like I look like a rebel. These people look like hungry for justice. कपड़ों से जाना जाता है गोदी मीडिया को. मुझे कपड़ों से जानने की बात नहीं है, बट अगर कपड़े भी आप वैसे पहनोगे, बर्ताव भी वैसे करोगे, हरकतें भी वैसे करोगे, तो फिर वो नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे यार. आप जैसे देख रहे हैं If a युवकों का footballer, okay, if a footballer just is wearing one a second. football jersey, okay, the conversation is only and only gonna start about football. Yes. So if that guy is completely saffronized, the conversation is only and only gonna go that way. Constitution gives him a liberty to do whatever he wants. Liberty to whatever, okay, but what that guy was doing, he was doing section 151 ka ullandhan. That is By provoking the people. no, by almost going for attempting a cognizable crime. What is a cognizable crime? Creating havoc, unnecessary havoc, no right narrative. That question that was asked, the first question that was asked, that why are you guys here? Are you kidding me? Why are you here? अभी इस बात का एक ही संक्षेप निकालते हैं कि आपने कहा कि दिल्ली में छात्रों को मार पड़ी इसलिए आप यहाँ पे आए. इसके बाद में अगर छात्रों को मार नहीं मैं पड़ती, अकेला नहीं हूँ. आपने देखा होगा चंद्रशेखर आजाद जी, हाँ, ठीक है, वो भी वहां पे अपना धरना लेके बैठे हैं. क्यों? बिल्कुल. 20 तारीख के बाद से ही. बिल्कुल. And us, आप, मैं, sir, us being journalists, it is our responsibility. Every single person has the right to information over here. Yes, right. It is our responsibility to give them right information, right narratives. Yes. हर एक लोग नहीं आ सकते यहाँ पे, Right. क्योंकि अपने देश में ये सब चीजों से सबसे बड़ी Right. चीज है भूख. Right. If a farmer commits suicide,
उसके बच्चे अपने डैड की बॉडी को नहीं देखते, उसके बच्चे अपने डैड के बाजू में जो खाना बनाया उसको देखते हैं, क्योंकि उनकी भूख बढ़ी है as compared to the emotions for their own father. Correct. So these are not the things that should be, you know, I know you guys are doing your right job, but right. as a citizen we need to. We don't have any ideology, right? As a media As person, a I have a journalist, neutral we should ideology, know. right? Yes. But let me tell you one thing. Being a journalist, Yes. objective journalism is as pompous and as ridiculous of a term as it could be, okay? Yes, right. There is 100%. nothing known as objective journalism. You cannot be a journalist and be objective towards certain things. You have to be subjective. Yes. You have to take the right stand. You have to show the reality. You cannot be objective that no, if I show this reality, the people who are sitting over there will be upset. No. Many journalists are showing the reality, right? But they Most are not of them. But they are not affiliated to the mainstream media. So Does we not cannot matter. we cannot justify Does everyone not matter. who is Okay. inclined to right Let me tell you what's going to happen after this particular project, okay? Globally and worldwide, every single influencer or every single hotshot celebrity, or even let's call out big time cricketers' names as well. Yes. I'm sorry for spitting, okay? They are not raising their voices. They will not. They will never. Yes. They will never. Okay, they will never. And the reasons are way beyond for common man's understanding. They are way beyond common man's pockets, and they are way beyond common man's pay scale. Right. So each and every single छोटे से छोटा मीडिया हाउस भी अगर या फिर एक अकेला बंदा कवरेज डाल के अगर कर रहा है दिल्ली जंतर मंतर में कवर, माय ओनली रिक्वेस्ट इज फॉर एवरी सिंगल पर्सन, डाउनलोड दोज वीडियोस, repost, reshare, but make sure it should be peaceful. It should not hurt anyone's sentiment. No gali galoch. Please, no gali galoch. Emotions are high, but abide the constitution and be respectful towards each other. Even if it may be the CM of or the anyone, PM or CM, just be respectful and stick to your demands. Do not give up. The flame has been fanned and it will be fanning through and through. जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे और भी युवा है, आपकी क्या मांगे हैं यहाँ पे? क्या आप Simply because of the resignation of the government and asking for accountability for what they are doing. I have been protesting since day one. जब से अभिजीत दीप्ते first time नागपुर आए थे, even way beyond, like अभी तो I have forgot कि how long I have been pissed at this government because of the actions. what are you studying now? I have completed my data science from IIT Madras. So basically you are IITian and you know all the aspect of National University, how they works, right? Right, and right now I have my business. I Okay. run a factory and all. So that let's keep that apart. यहाँ पे आए हुए सभी युवा, सभी के अंदर एक ही बात है, एक ही चेतना है कि सरकार से उन्हें जवाबदेही की मांग है। यहाँ पे आए हुए हर युवा पुलिस की वो बर्बरता का शिकार उन युवकों के साथ खड़ा है, उस मीडिया के साथ खड़ा है जो ये कहते हैं कि भारत देश में मीडिया एक चौथे स्तंभ के रूप में उभरना चाहिए था, पर कहीं कोई मीडिया है जो छात्रों को ही दहशतवादी बता रहा है और साथ ही साथ कुछ मीडिया चैनल इन छात्रों के ऊपर में पूरी की पूरी जिम्मेदारी डालते हैं। हम उन सभी छात्रों के साथ WH न्यूज़, नागपुर न्यूज़ की तरफ से खड़े हैं और हम ये मांग करते हैं कि न्यायपूर्ण इस देश में व्यवस्था खड़ी हो, धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा मंत्री और इस सरकार जवाबदेही हो और सरकार इन छात्रों की मांगों के साथ न्याय करे। मैं अथांग करडे WH न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।